Now we need only two members, variables and methods. So if we are declaring variable as a private, then can we inherit it? Can we inherit that variable? No, we can't inherit the private members of a base class, like private variables, private methods. We can't inherit them into the subclass. हम उन्हें inherit नहीं कर सकते, right? See practically. Now we create one new class, base class. Right click on a package. So it getting open. New class. Base class. And then after adding one more class. So the base class. One variable as a private. Int a. Int a is equal to 10. Then one data function is there. Right. am1. So both the members of a base class is a private. Both are declared as a private. Right. Base class function. Base class function. काय झालं बेटा थांब एक मिनिट see base class function. See base class function. M1 function is created in a base class. Which is the visibility mode of that function? Private is a visibility mode. Means it is visible within the only base class. Okay. Outside the class, can it is visible? Visible रहेगा ना कोई access कर सकेगा क्या इसे? No, because it is not visible outside the current class. Now see which is variable, instance variable a. Its access modifier is a access specifier is a private. It is visible within only the base class. It is not visible outside the current class. Base class में वो दिखेगा, right? A variable और M1 function वो visible हो गए क्या outside the current class? Base class के बाहर उन्हें access कर सकते क्या? नहीं. Why we can't access? Because it is not visible outside the class. So subclass is extend to whom? It extends base class. So tell me guys, how many members in a subclass? Is there any member of a subclass? In a subclass, there is no any members in a subclass now. And how many members in a base? There is two members with which access modifier? With a private modifier, right? So हमारा concept क्या था कि हम if we use a inheritance, means one of the classes extends the one of a class, then all the members of that class of a base class is virtually present in a subclass. But which members were declared inside the base class? Private members. That members are visible into the virtually available in subclass? No, that is not virtually available in a subclass because private members can't be inherited. हम उन्हें inherit कर सकते हैं क्या? No, that is not a visible.
those members are not visible because their visibility mode is a private. अब यहाँ पे देखो, now see in a base class if you are creating one more function void m2. Now see guys, that m2 function is visible in virtually available in a subclass that is available virtuality that is available in a subclass. Yes, that is available in a subclass. How? Because their visibility mode is a default is accessible within a sub package different classes, okay, and subclasses also, right? M2 is virtually available into the subclass because of extend keyword. We are inheriting the properties of a base class into the subclass. Sub is the child class of which base class, right? Then the members of a base class which is visible outside the class, those members are virtually available into the subclass, guys, right? So now take one function main. Okay, and we create the object of which class? Subclass. Sub s1 is equal to so okay, by the object of subclass, can we call a m2 function? Yes, we can call it into the subclass. Okay, यहाँ तक clear है आप लोगों का? Now see about the constructors and blocks in Java programs. Because m2 का visibility mode क्या है guys? There is a visibility mode is a default, then that is inherited into the subclass. Okay, virtually that is available in our subclass, guys. Okay, how many members of a subclass? There is a two member. One is a main function and second is a virtually available which function? M2 function available. Okay, inherited into the sub. If we create the object of if we create the constructor in a base class. Now see base without passing any argument. Okay, and we are creating the object of which class? We are creating the object of we are created the object of which class, guys? Subclass. Then the execution of a base class constructor is possible or not? Yes, that is the possible. Base class constructor, right? अब कहाँ से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है? अब नाउ सब क्लास एक्सटेंडेड टू whom? Base class. So we are inheriting the properties of a base class. Then constructor is inherited. Constructor is not inherited in Java, guys. Constructor is not inherited. तो इसका इनहेरिटेंस होगा क्या? नहीं होगा, बट उसका एग्जीक्यूशन होगा. तो हाउ? अब किसका ऑब्जेक्ट बना रहे गाइस? We are created the object of a subclass. Now so which type of a constructor is constructed in the subclass? Default constructor is constructed, and there so in a first line, which is statement is defaultly created? Super keyword. That function is placed at a first statement in that default constructor, right? Now see sub the super, right? Virtually it is present in a subclass. Now if you create the object of a subclass, then which type of constructor is constructed in a subclass? Default constructor. That is provided by the JVM. Compiler construct the default constructor and make the V statement as a first statement, super statement as a first statement, calling statement, constructor calling statement as a first statement, right? From that क्या होगा फिर? Base constructor execute होगा, right? See the output of this program. Base class constructor. Okay. What are the uses of a super keyword in our Java programs?
See guys, super keyword in Java. The super keyword in Java is reference variable, which is used to refer immediate parent class object. जैसे कि हमने सीखा था, where learn about the this keyword. This is the current class reference variable. This is the current class object, right? Same as it is super keyword working in Java program. The super keyword in Java is a reference variable, which is used to refer immediate parent class object. तो किसके क्लास which class object को रेफर करता है parent class object whenever you create the instance of subclass, an instance of parent class is created implicitly, which is referred by super reference variable. See guys, if you create the object of which class subclass, now that time immediately super default constructor is constructed and there a super keyword is constructed by the generated by the JVM, and instantly the object creation of which class parent class object is created, okay, by super reference variable. See, let's look guys, we are creating the object of a subclass. Now after the creation of an object of subclass, which constructor is constructed? Default constructor. And which is the first statement on that constructor? Super. Now from that, यहाँ से क्या होगा? From this guys, super instant which class का object create होगा? Instantly create the object of a parent. Parent class का object create होगा and उसे refer कौन करेगा? Which is the reference variable of that object? Super is the reference variable of a parent class object, right? यहाँ से अगर object create हो रहा है means which constructor will get execute? Appropriate constructor will be get execute. Okay. Now see the another use of a super. Use of a Java super keyword. Super can be used to refer immediate parent class instance variable. किसके लिए use होता है guys? Super is can be used to refer instance variable to parent class. Now in which situation we use the super keyword? Constructor calling of a parent class. Variables we can call by using the super keyword. Functions of a parent class we can call by using the super. Next use of super can be used to invoke immediate parent class method. Super function can be used, third point, super can be used to invoke immediate parent class constructor. Now see, now let to clear. Next, if we are creating a which kind of a constructor? Parameterized constructor. Now see, now which kind of error there guys over there? Which kind of error? Compilation error, because we are creating a same constructor, means constructor duplicate. Now pass the argument string s, right? See, yes, parameterize. Okay. Now see over there. Now, is there any compilation error guys in a subclass? There is no any compilation error because of in base class which constructor is available, no argument constructor is available already. So if we comment it and see, there is a compilation error. Implicit super constructor base is undefined for default constructor. Base class में implicit constructor available है क्या अभी? Now implicit super constructor is undefined for default constructor. Must define an explicit constructor. हमें क्या करना होगा यहाँ पे? There is a parameterized constructor is available in a base class. That's mean we have to create a constructor in a subclass. Add a constructor. One quick fix available.
right? Without any argument, you can see. Okay, is there any argument or there? No argument. But calling time, which type of argument we have to pass there? String type of argument. Because of in a base class constructor, which kind of argument were passed over there? Were created a which kind of argument? String type argument. Then we when we call this constructor, then we pass the string type value to call a constructor. Java. Okay. Without this constructor creation, is it possible execution of a base class constructor? Base class constructor का execution possible होगा क्या guys? Without creating any constructor in a subclass? Not possible. Okay. Want to call it? Okay. समझ में आ रहा है guys? अगर base class में parameterized constructor use कर रहे हैं, we are using the parameterized constructor in a base class. Means होता है क्या है? सब क्लास में हमें नेसेसरी होता है, इट्स मैंडेटरी टू क्रिएट वन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन अ सब क्लास टू कॉल अ पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें, अगर आप बोलोगे कि इसकी constructor execution depends on object creation. Now we create the parent class constructor object here. Base b1 is equal to with the passing the value, which kind of argument in type of value. Okay, now pass the value. Okay, now we are created the object associated with the which constructor? Argument type constructor, right? So that problem is solved or not? प्रॉब्लम सॉल्व हो रही क्या? नहीं हो रही है. कंपाइलेशन एरर सेम हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से ना अगर पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है कि सब क्लास में हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड हमें उसे कॉल करना होता है. यहाँ पे बना दो एक कंस्ट्रक्टर सब and use a super keyword to call a parent constructor by passing the string value. Okay. Right. अब किसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा? पैरेंट कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा क्या? The execution of a sub class base class constructor is executed. Yes. Now see the output. Run as Java application. Base parent constructor. अब हमेशा क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन में फर्स्ट किस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है गाइस? पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. इसका एग्जीक्यूशन होता है पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है चाइल्ड क्लास में. parameter constructor and subclass constructor. Okay. First, we are getting the output from a parent class constructor. So see next concept. Can we create a multiple constructor in a parent class? Yes, we can create a multiple constructors in a parent class. Constructor start set constructor also.
Okay, base class में कितने आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने? Were created a 2 argument constructor. Were taking a 2 arguments. अब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्या गाइस? द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल. उसका एग्जीक्यूशन होगा क्या? ओके, only the output we are getting from base parameter constructor and sub class constructor. कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ. which thing is necessary? We have to call it explicitly. हमें explicitly से call करना होगा. How we can call it? By using the super keyword. Super keyword after यहाँ लगा देते हैं. We are using which kind of value we have passed there over there? Passing the 10, 20. Now in this from that statement, which constructor will get executed? To args constructor will be executed. Okay, to args type constructor of the base class is executed. But the string type argument वाला constructor execute हुआ क्या guys? नहीं हुआ है क्योंकि उसे हम call नहीं कर रहे. Can we call a multiple constructor at the same time? Same place, yes. Super passing the string value. Is it possible? No, because in a constructor calling, super is a first statement. Super statement क्या होती है? First statement होती है, right? This is the first statement, right? Super is the first statement, but second super constructor calling statement is on a second place. Then that is the compilation error. See what kind of compilation error? Constructor call must the first statement in the constructor. Constructor calling statement क्या आता है? हमेशा first statement होती है. But we are calling it to constructor. So we are using a 2 times super function. No. So among that, one is at a first line and second on a second line. So it is possible. Possible होगा क्या guys? क्योंकि हमेशा constructor calling statement is a first statement in a constructor. First statement होती है. But हमने यहाँ पे second statement पे use किया है. So second time में क्या होगा? Compilation error आएगी. इससे हटा दो. Current class constructor. How we can call a constructor class constructor? By creating an object, and second way by using the this function. Now which constructor is called from sub? यहाँ से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? तो आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर. बट हमें स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट को कॉल करना है. तो this pass the value. Okay, अब एग्जीक्यूशन पॉइंटर कैसे वर्क करेगा? हाउ द प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड? नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन व्हिच कंस्ट्रक्टर विल कॉल फर्स्ट? सब क्लास कंस्ट्रक्टर विल कॉल फर्स्ट. ओके, और देयर व्हिच इज द स्टेटमेंट इज first statement over there guys? Constructor calling first statement in a sub constructor. यहाँ से 2 types of argument. What kind of argument over there? Integer type. Now it will see, look into the base class. There is a integer type argument constructor is available or not. Okay, yes, there is a present. Then come inside the constructor body and see which is the first statement. Constructor calling first statement with a value string. String argument constructor is available. Yes, string argument constructor is available. That is present. So the first output from a string argument constructor. Then remaining come back into the again to our type constructor and print the output of to our type constructor. Then it comes out inside the sub constructor. See the output base subclass constructor. That way the execution of our program. Base parent constructor, then 2 argument type constructor and subclass constructor. Okay, getting guys? Can we create a multiple constructor in a base? Yes, we can create multiple. We can declare the multiple. We can use a multiple constructor in a base class. No issue. Okay. Can we create a more constructors in a subclass? Yes, we can create also more constructors, more than one constructor in a subclass also. It's no issue.
But arguments in C. यहाँ पे क्या करना होगा? Loop implicit super constructor basis and define must explicitly invoke another constructor. So which keyword we use over there, guys? By creating this, is it possible? No. We use the one this keyword. Okay. Column with constructor. Code. Passing the value. Okay. Then insert here. This. Okay. So if you are adding more than one constructor in a subclass, यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर्स बना दिए हमने? 2 कंस्ट्रक्टर्स, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट? And were created the one object. Was created one object of a subclass. तो we object बन रहा है तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन object creation. That object creation is matched with the which constructor? No, with that. ओके अब करंट क्लास में अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं फॉर दैट एग्जीक्यूशन, फॉर दैट क्विक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, वी क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद दैट कंस्ट्रक्टर. अब देखो यहाँ पे तो बना सकते हैं बट हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ क्रिएटेड द वन ऑब्जेक्ट दैट इज मैच विद द दैट इज एसोसिएटेड विद दैट कंस्ट्रक्टर, राइट? अब करंट क्लास कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है, कॉलिंग ए कंस्ट्रक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है, then we use this function, we use over there this is the current class reference, right? अब this से किससे कॉल होगा? now सब क्लास टू आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर, उससे किससे कॉल हो रहा है गाइस? फ्रॉम दैट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. now in inheritance every time which class constructor will get executed first, guys? Parent class constructor executed first, and after that the child class constructor is executed. Now see the output. To archetype constructor of a base class, then base parent constructor, right? Parameterized, then sub to arc constructor, subclass constructor, then subclass constructor. Okay. पहले तो किस क्लास का एग्जीक्यूशन होता है? तो किस क्लास के कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होता है? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. पेरेंट. ओके हम इनहेरिटेंस में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं. पेरेंट में यस वी कैन यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. इन अ चाइल्ड क्लास यस वी कैन यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. देयर इज नो एनी इशू. ओके हम कितने भी कंस्ट्रक्टर पेरेंट में भी यूज कर सकते हैं, सब क्लास में भी बना सकते हैं. ओके यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब सुपर कीवर्ड किसके लिए कॉल होता है? सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है? तो कॉलिंग ए कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द सब क्लास. चाइल्ड क्लास से हमें अगर पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो बाय यूजिंग द सुपर. ओके सुपर इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इस क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास. किसका रेफरेंस वेरिएबल है वो? पेरेंट क्लास का.
अब होता है सुपर कीवर्ड कब यूज होता है और नाउ अगर सेम नेम विद द सेम नेम अगर हो गए वेरिएबल्स अब पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड we can use super keyword to access the data member or field of a parent class. It is used if parent class and child class values same field. Yes. Child class have a same value, right? Both the class variable name is the same. Should be same. Then we use the super keyword to differentiate between the parent data member and child data member. Now see in a class base with the name A in a subclass there again name with the same name A now guys. See practically guys. कब यूज करते हैं और सुपर कीवर्ड का we can use super keyword to access the data member or a field of a parent class. It is used if parent class and child class have a same field. Same field रहेगी तो हम super keyword यूज करते हैं. How we can use it? See practically base class. Int A is equal to 10. Okay, that is the instance variable of a instance variable, right? A base class. And now created the one more variable inside the A is equal to 20. So, for our int x is equal to this base class base class number. Base x is equal to in a base class. Which how many members in a base class? Only one member. Data member means variable. Data field, data member, and variables. The same of one entity. Now, this is the instance variable of a base class. Which type of a variable created there, guys? String type variable. Okay. Name of the variable is S is the name of a variable. Now, in a subclass, again we are created a one variable. Which type? String type, and the name of that variable is also same. S is a name. Is same with the base class. Okay. The same class on the same source file. Now see guys, we are created one more string variable. S is equal to class member. In a base, same name. In a subclass with the same name of the variable. Both the members of a base and subclass के variables बनाए ना instance variable with the same name बना दिए. यहाँ पे भी string type argument string type variable बनाया है, उसका नाम है s. सबक्लास में भी हमने बनाया string type, उसका भी नाम क्या है s है.
अगर बोथ द नेम ये तो सेम नेम होता है, ओके यहाँ बना दिया। यहाँ अगर हम मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे and we are calling the which function is we call as variable। हमने किसे कॉल किया guys? We are called as। What is the output of this line guys? What is the output of that line? Which is the answer? Sub class subclass member is the output, okay? Because given by default given a first priority to whom guys? Subclass member। सब क्लास का जो वेरिएबल रहेगा ना उसे क्या करेगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, गिवन अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सब क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, बट वांट टू आंसर वांट टू आउटपुट फ्रॉम अ बेस क्लास वेरिएबल। हमें किसका आउटपुट होना है गाइस? हमें किसका? बेस क्लास के वेरिएबल का आउटपुट होना है, बेस क्लास की वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। उसका नाम क्या है? बेस क्लास का वेरिएबल का नाम है एस। हमने ये से यहाँ पे प्रिंट करना है, कंसोल पे इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवाएंगे। तो बट आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? सब क्लास मेंबर करके। बट हमें आउटपुट कहाँ से होना है? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से हमें आउटपुट जरूरी है, बट नॉट गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम अ पेरेंट वेरिएबल। पेरेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो बोथ द वेरिएबल्स नेम सेम। इसमें क्या हो रहा है कि बेस क्लास वेरिएबल का नाम एंड सब क्लास वेरिएबल का नाम सेम हो रहा है, राइट? तो हाउ द जेवीएम डिफरेंशिएट डिस्टिंग द बोथ द वेरिएबल्स? अब इसमें बाय डिफॉल्ट अगर कर रहे हैं हम, इफ आर कॉलिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल जेवीएम गिवन अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू हूम? सब क्लास मेंबर, राइट? बताकर हमें पेरेंट क्लास के आउटपुट होना है नाउ इन सेम नेम, and we use a super keyword super dot s। तो अब now we are getting the output from a parent class। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? base class member, base class member आएगा, right? See it practically। create dot data so that's one dot and one, okay, okay. That source file create name there one source file, now see output Java application getting the output from both the class subclass member and base class member। Now if comment that line mandate, okay, हमने सीधा सीधा क्या करते हैं, हमने s नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा गाइस कंसोल पे? वी आर एक्सपेक्टिंग द आउटपुट फ्रॉम अ बेस क्लास वेरिएबल। हमें ना बेस क्लास मेंबर करके आउटपुट जरूरी है, इट्स नेसेसरी। तो यहाँ पे हमने उससे प्रिंट करने के लिए ना यहाँ पे एस कर दिया है, ओके, टेकन नेम ऑफ वेरिएबल। अब आउटपुट क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज द आउटपुट?
subclass member. Okay, means by default first priority goes to whom? JVM given a first priority subclass member. अगर बोथ द क्लास मेंबर सेम अगर होते हैं तो आउटपुट हमेशा का किस क्लास के मेंबर को मिलेगा? हमें गाइस चाइल्ड क्लास मेंबर का आउटपुट मिलेगा। ओके, अगर हमें उसे डिस्टिंग करना है, हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है? पेरेंट मेंबर से, तो वहाँ पे यूज करना है यूज ओवर देयर सुपर कीवर्ड, यूज द सुपर कीवर्ड। देन सुपर किसे रेफर करेगा? पेरेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमें are getting the output from parent and sub. ओके, क्लियर? अगर वेरिएबल के नाम पेरेंट का वेरिएबल एंड चाइल्ड का वेरिएबल दोनों वेरिएबल के नाम अगर सेम होते विद द सेम नेम तो उस टाइम हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं कॉल पेरेंट्स नंबर। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अबाउट द मेथड। The super keyword can also be used to invoke parent class method. It should be used if subclass contains the same method as parent class. अगर parent class में method जो है as it is with the same name अगर child class में भी हम उसे यूज कर रहे हैं तो in that case हमें किसका यूज करना होगा? super keyword का, अगर parent function का execution करवाना है तो होता है कि it is used if method is overridden. ओवरराइडिंग कंसेप्ट है अगर सेम मेथड पेरेंट में अवेलेबल है विद द सेम नेम चाइल्ड में भी हम बना रहे हैं तो उस टाइम अगर पेरेंट का हमें एग्जीक्यूशन होना है तो देन वी यूज द सुपर कीवर्ड। ओके, बेस क्लास one more function class function सब सब में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें ना कॉल करना है, किसे कॉल करना है गाइस? पेरेंट फंक्शन को। पेरेंट फंक्शन का आउटपुट हमें प्रिंट करना है कंसोल पे। तो हमने यहाँ पे चाइल्ड में भी विद द सेम नेम, चाइल्ड में भी m1 नाम से फंक्शन बना दिया, बेस क्लास में भी m1 नाम से। तो यहाँ पे है ना बाय डिफॉल्ट कॉल करवा रहे हैं s1 डॉट m1 कॉल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अब आउटपुट क्या रहेगा गाइस? child class function. Okay, what is the output? Child class function. Thus JVM given the first priority child class के नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, राइट? अगर हम चाइल्ड क्लास में कॉल करवा रहे हैं तो अगर हमें सुपर क्लास का भी एग्जीक्यूशन चाहिए, सुपर क्लास फंक्शन, वी यूज अ सुपर। अब सुपर कैन बी यूज सुपर इन अ स्टैटिक फील्ड गाइस? हम सुपर को स्टैटिक एरिया में यूज कर सकते हैं? नो, बिकॉज सुपर इज द इंस्टेंस। इज इट पॉसिबल? डॉट m1 करते हो तो हो रहा है क्या यूज आते हैं? बिकॉज मेन फंक्शन इज स्टैटिक। सी compilation error, cannot use super in a static context. We are not use the super in a static error, right?
ओके, यहाँ से हम किसे कॉल कर रहे हैं, m1 फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आउटपुट क्या रहेगा, दोनों बेस क्लास का भी फंक्शन एग्जीक्यूट, parent class function and child class function, right? ठीक है, अगर m1 डायरेक्टली कॉल करेंगे हम तो सुपर क्यूब, तो किस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा पहले, which function will get executed, चाइल्ड क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमें पेरेंट का यूज करना है, पेरेंट का आउटपुट जनरेट करना है, पेरेंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना है, तो बाय कॉलिंग इट बाय यूजिंग द सुपर कीवर्ड, बाय यूजिंग द सुपर, हम किसे कॉल करेंगे, m1 फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। यहाँ पे किसी को डाउट है गाइस, इन हैव डाउट, सुपर कीवर्ड यूज होता है जावा में, उसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को, उसका यूज आपको समझ में आया गाइस? Yes. Okay, in three cases super keyword used in Java. First, to call a constructor of a parent explicitly, data members, data fields means variable अगर same नाम से हो, parent and child का, while in the super keyword, अगर parent function and child function with the same name, OREAD and OREA method, so then we call parent function by using a super keyword. Okay, super keyword of execution of a static and instance block in inheritance, static का और inheritance instance block का execution देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है? Two types of blocks, static, so static block of which class, right? Now, same block is used to अब इनहेरिटेंस में आफ्टर द कंपाइलेशन हर एक जावा क्लास की क्या होती है, डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, ओके, फॉर एवरी क्लास डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कन्वर्ट मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, राइट। तो इनहेरिटेंस फॉर एवरी क्लास, अब इनहेरिटेंस में कितनी क्लास यूज कर रहे हैं हम, वेयर टू क्लासेस आर यूज होते हैं, बेस एंड सब, बेस क्लास भी सब डॉट क्लास फाइल होगी क्रिएट, एंड सब क्लास की भी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी, राइट। बोथ द डॉट क्लास फाइल्स आर सेपरेटेड इच अदर, राइट। आप देखो यहाँ पे हमने बना दिया है, आउटपुट में क्या आएगा गाइस, व्हाट इज द आउटपुट, फर्स्ट which is executed static block of a parent class, static block का execution first होगा, then main function of a child class, right। जैसे हमने सीखा था सिंपल जावा प्रोग्राम्स में, static block का execution first होता है, first execution of a static block, then after constructor and instance block and whatever functions remaining of that class, right? So can we use a more static blocks? Yes, we can use a more than static blocks, based on child class. Depends on their sequence, we'll get the output. Now, can we use a subclass
static block. Yes, we can use a subclass static block. Child class आप कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा पहले, पेरेंट का होगा कि चाइल्ड का होगा गाइस? थिंक लॉजिकली. Child. ओके, इसका एग्जीक्यूशन होगा फर्स्ट. आउटपुट डेटा आउटपुट ऑफ विच ब्लॉक? पेरेंट स्टैटिक ब्लॉक. Static block of a parent class, then child class static block. ओके, इनहेरिटेंस यूज करें तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन किसका होता है? पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट स्टैटिक, पेरेंट इंस्टेंस. देन आफ्टर दैट child class constructor, child static, child instance block will get executed. ओके, यहाँ पे किसका एग्जीक्यूशन हुआ पहले? बेस क्लास का. पेरेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो रहा है. देन आफ्टर we get the output from a static block of the child class. राइट? समझ में आ रहा है? स्टैटिक ब्लॉक इनहेरिट होते हैं क्या? स्टैटिक इज नॉट इनहेरिट्स, बट उसका एग्जीक्यूशन इनहेरिटेंस में होता है. हाउ द स्टैटिक ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड इन इनहेरिटेंस? फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक ऑफ अ पेरेंट, देन आफ्टर चाइल्ड स्टैटिक ब्लॉक. पहले स्टैटिक ब्लॉक किसका एग्जीक्यूट होगा? पेरेंट का. उसके बाद चाइल्ड का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. राइट? कैन वी यूज मोर देन वन ब्लॉक्स parent and child? Yes, we can use more than one blocks. That is second block. Okay. अब सब में भी बना सकते हैं. कैन वी यूज जैसे में चाइल्ड. इसका आउटपुट क्या रहेगा? पहले तो स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास, स्टैटिक सेकंड ब्लॉक ऑफ पेरेंट, चाइल्ड क्लास स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक ऑफ चाइल्ड. ओके, सीक्वेंस वाइजली वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. Sequence wise execution of a static block in which order they are present in the parent and child. Let's think about the instance block also. Without the name, this block is the what is the instance block of a It's instance block execution depends on object creation. हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या प्रोग्राम में? कोई क्लास का पेरेंट का भी नहीं बनाया, चाइल्ड का भी नहीं बनाया. तो इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा क्या गाइस? आप नो इंस्टेंस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड. नो, मेन फंक्शन ऑफ अ चाइल्ड क्लास. राइट? हुआ है क्या एग्जीक्यूशन चाइल्ड का? सॉरी, इंस्टेंस ब्लॉक का नहीं हुआ. इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन.
So can we create an object of a base class? Yes, we can create a base class object. P1 is equal to object. हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं गाइस? नाउ वी आर created the object of a parent class. तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूशन होता है the output instance block of a parent. Yes, Yogesh. Hello. इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट किसका हो रहा है गाइस? पेरेंट क्लास का. किसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ कमेंट इट. अब बनाते किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट. क्रिएटिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट s1 is equal to new. Now see what is the output of this program. Instant block of the parent, instant block of the child. Both the class instant block is executed. दोनों ही क्लास के इंस्टेंस ब्लॉक है ना एग्जीक्यूट हुए. किसका ऑब्जेक्ट बनाया? तो where we create the object of a child class. हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे तो पेरेंट का भी इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड का भी एग्जीक्यूट हो रहा है. बट where created the object of, if we create the object of a parent class, हम अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम इंस्टेंस का चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस एग्जीक्यूट होगा क्या गाइस? नहीं हो रहा है. चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. अब देखो लॉजिकल थिंग देखो कि यहाँ पे सब क्लास चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे तो हमने सीखा है अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे कौन सा क्या होगा गाइस? यहाँ पे ना सब क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट होगा. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट होगा और उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. अब सुपर हो रहा है तो इंस्टेंटली क्या होता है? देखो कि यहाँ पे वर्चुअली बेस लाइक ऐसा कंस्ट्रक्टर बन रहा है. सुपर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट और सुपर इज स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है बाय द जेवीएम. इस तरीके से वर्चुअली अवेलेबल हो रहा है विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन. अब सुपर कीवर्ड कॉल हो रहा है मींस यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है मींस इंस्टेंटली किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा गाइस? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. पहले तो एग्जीक्यूशन के लिए कैसे होगा? एग्जीक्यूशन हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. यहाँ पे ना सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट हो रहा है. सुपर कीवर्ड इज फर्स्ट स्टेटमेंट. यहाँ से ना ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है. इंस्टेंटली पेरेंट का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है. पेरेंट का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है मींस पेरेंट का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इंस्टेंटली तो वहां पे किसका एग्जीक्यूशन होगा? इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ पेरेंट. पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा? इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ पेरेंट. पेरेंट का इंस्टेंस ब्लॉक फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा. देन आफ्टर दैट यहाँ का पूरा सारा क्लियर हुआ देन इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास. एग्जीक्यूशन समझ में आया गाइस आप लोगों को? मींस अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? चाइल्ड क्लास में. तो इस तरीके का वर्चुअली बाय द जेवीएम लॉजिकल थिंग होती है. और वहां से ना किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉल होगा? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ सुपर. ओके पेरेंट का कॉल हो रहा है तो वहां पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? बेस क्लास का. बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है. हमने सीखा है इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन. पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है तो पेरेंट का इंस्टेंस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट. पेरेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. देन आफ्टर सारा एग्जीक्यूशन होने के बाद चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट. ओके चाइल्ड ब्लॉक का भी एग्जीक्यूट होगा. दिस वे that we get the output on a console. Instance block of a parent and instance block of a child, right?
अब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो गाइस चाइल्ड का एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है तो स्टूडेंट कहाँ पे कॉल जा रहा है? इनसाइड द बेस क्लास। यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कॉल होगा और वहां से चाइल्ड को, पेरेंट से चाइल्ड को कॉल नहीं होता है, चाइल्ड से पेरेंट को कॉल कर सकते हैं। यस, समझ में आया इंस्टेंस ब्लॉक? Can you use a more than one instance block in Java? Yes, in inheritance, yes, we can use a more than one instance block in a inheritance. Sequence wisely depends on their sequence. तो sequence wise क्या होगा उसका execution होगा. Okay, ये हुआ हमारा inheritance का. Means inheritance में क्या देखा हमने कि variables access कर सकते हैं. Yes, we can access the variables. And which types of variables we can't access? Private variables में access कर सकते हैं. Then हमने देखा कि मेथड प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते, rather than other methods we can access. Okay. Inheritance, which are the things are inherited in Java? Variables and methods. Constructor, static and instant block is inherited? No. Inheritance of a constructor, static and instant block, right? उनका इनहेरिटेंस नहीं होता है, बट वो उनका एग्जीक्यूशन होता है. ओके, बट हमें लगता है कि वो इनहेरिट करेगा, राइट? सीम्स टू लाइक एन इनहेरिटेंस. क्लियर इट?